Okay, I'll be exactly starting from the point where we left in the previous class. If you remember, we discussed how to determine the convergence of a power series, right? So I gave you two questions to try at home. So this was, one of them was summation n is equal to 0 to infinity x raised to power n by n into square root of n 3 raised to power n. Sorry, it started from 1 to infinity. Okay, so this was the statement. So I hope everyone has tried this question. This was to be done on the similar lines which I explained to you. The way we discussed one question, on the similar lines you had to do this question. So yes, so I'll be very quickly doing it. In case anybody will be having any doubt, then all doubts will be cleared. An will be mod of an. So mod of an will be x raised to power n by n, this mod, and ultimately we know this is just this. And then we used to apply ratio test here, but we can also apply root test here. I told you whenever you are taking the mod, after that you are free to apply either ratio or root test. So since यहाँ पे power में n है, so it's, we can try with root test. No problem if you have already done with ratio test and you are getting the answer. It's one and the same thing. So when you will be computing this limit mod of an raised to power 1 by n, so what is going to happen? Mod of x raised to power n by n, this whole raised to power 1 by n. So what will be the value of this limit? The value of this limit will be mod x by 3, and we know that what we want actually for this limit to happen. So we want this to be less than 1. For convergence, we want this to be less than 1. So this will give you the interval x lies from -3 to 3. And then you will be checking at the endpoints. So when you will be checking at the endpoints, the convergence, so firstly we'll be checking say at x equals to 3. So x equals to 3 pe, this series is turning out to be absolutely convergent. You put x equals to 3 here, what do you get? Summation 3 raised to power n and 3 raised to power n. So this is basically 1 over n raised to power 3 by 2, which is nothing but a convergent P series, right? So at x equals to 3, it is already a positive term series. So, and it is convergent. So since it's positive term series and it is convergent, so we can call this absolute convergence. Because, you know, here we are asking, we are telling the answer in detail. So if your series turns out to be a positive series and that happens to be convergent, so you will be including it in the category of absolute convergence, because for positive term series, convergence and absolute convergence means the same thing. So this will be absolutely convergent. And at x equals to -3, what is going to happen? You will be getting an alternating series, this one, when you put x equals to -3 in the original series. So this one is also absolutely convergent because now it happens to be alternating series. तो alternating series के ऊपर भी हम सबसे पहले mod लेके test करेंगे. So which will be this again, P series convergent. So this is also absolutely convergent. So your final answer of the question is radius of convergence is 3. Interval of absolute convergence is, ये आपका ओरिजिनल इंटरवल आया था बट वी चेक्ड कि दोनों एंड पॉइंट्स पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है. सो बोथ ऑफ दोज inequalities will be there at the both the end points when you define interval of absolute convergence. And similarly, interval of convergence will be same as interval of absolute convergence, and nowhere this series is conditionally convergent. Because if you remember the statement of the question, ये चार चीजें आपको आंसर करनी होती है: रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, interval of absolute convergence, interval of convergence, and where the series is conditionally convergent. Conditionally convergent का कभी भी interval नहीं आएगा. It's going to be at specific points. जैसे end points पे हो सकते हैं conditionally convergent, but you will never get an interval where the series is conditionally convergent, right? So I hope that is clear.
So everybody, those who have tried this, I hope everybody is getting the same answer. Yes, I can explain that again. At x equals to 3, why I am calling this absolute convergence? Because इससे पहले हमने ये वाला केस नहीं देखा है, right? Because I told you कि जब आप end points substitute करते हो, so whatever is going to happen is आपका x तो eliminate हो जाएगा. तो x eliminate होने के बाद उसके पास दो choices होते हैं. वो जो सीरीज है एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो पॉजिटिव सीरीज भी हो सकती है और वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज भी बन सकती है. एज यू कैन सी 3 सब्स्टिट्यूट किया तो ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव सीरीज बनी और -3 सब्स्टिट्यूट किया तो ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज बनी. सो दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे. तो अगर तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज बनती है सो क्या होता है हमें पता है. ऑल्टरनेटिंग सीरीज में हमारे स्टेप्स क्या होते हैं कि यहाँ पे वी चेक फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस फर्स्ट एंड देन वी चेक फॉर कंडीशनली कन्वर्जेंट. अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं आती है तो ये हमें क्लियर है. बट जब पॉजिटिव सीरीज आती है तो फिर यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे. क्योंकि पॉजिटिव सीरीज के ऊपर फिर आप कोई भी टेस्ट लगाओगे, इंटीग्रल कंपैरिजन, रेशियो रूट जो भी लगाओगे, तो पॉजिटिव सीरीज के पास दो ऑप्शन है. वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है. बिकॉज ऑल्टरनेटिंग सीरीज में तो हमने एब्सोल्यूट और कंडीशनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. ऑब्वियसली यहाँ पे भी थर्ड पॉसिबिलिटी है, डाइवर्जेंट हो सकती है. बट पॉजिटिव सीरीज के लिए हमने दो ही चीजें पढ़ी है, या कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. So what I'm trying to say, if it is divergent, then okay, it's divergent. But if it is convergent, then you call it absolutely convergent. Because positive term series is convergent means positive term series is absolutely convergent. तो उसके लिए मॉड होना ना होना एक ही बात है. कंडीशनली कन्वर्जेंट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पॉजिटिव सीरीज के लिए. बट अगर पॉजिटिव सीरीज कन्वर्जेंट है तो आप उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलोगे. बिकॉज यहाँ पे जब आप ये डिफाइन करोगे इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, तो 3 पे अगर मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, इनइक्वालिटी को इनक्वालिटी ही रखा, सो ये रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज 3 पे माई सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. बिकॉज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब है मॉड लेके कन्वर्जेंट आनी चाहिए. वो तो पहले ही पॉजिटिव है, तो उसके लिए convergence is equivalent to absolute convergence for a positive term series. I hope that answers this. If anybody had doubt in this, so ये आपको जिस क्वेश्चन में भी ये सिचुएशन मिलेगी कि अगर आपकी सीरीज पॉजिटिव सीरीज बनती है और वो कन्वर्जेंट आ जाती है, so you include that into the absolute convergence because it is one and the same thing, right? So I hope this is clear. Let's move ahead to the next question which I gave you. So the next question which I gave you is summation n is equal to 0 to infinity minus 1 raised to power n x raised to power n by n square plus 3. So can you tell me what is the you write your answers in the chat box. What is the radius of convergence? Those who have solved this one for this question, what you are getting? It's 1. Yes, radius of convergence is 1. Interval, what is the interval of absolute convergence? It's -1 to 1. ये आप सॉल्व करके देखोगे बहुत इजीली आ जाएगा. ये इंटरवल आएगा आपके पास और इनमें से -1 पे आपकी सीरीज डाइवर्जेंट आएगी और 1 पे आपकी कंडीशनली कन्वर्जेंट आ रही है. सो दिस इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. क्योंकि 1 पे at x equals to 1 your series is conditionally convergent and at x equals to -1 your series is divergent, right? ये आप verify करके देख सकते हो. So I'm directly just telling you the answer. This question has been solved in my notes which are available there on the website. So आप वहां से इसके calculations verify कर सकते हो. उसके बाद भी किसी को नहीं समझ में आएगा then we can discuss it later on. But otherwise this is the all about this question. Outside the endpoints interval, I'll be coming to your questions later. Outside the interval divergent ही होता है. हमें सिर्फ इंटरवल के अंदर देखना है. इंटरवल के अंदर strictly inside we always have the absolute convergence.
तो जो हमारे पास उसके बाद एंड पॉइंट्स पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, मतलब तीन, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी आ सकती है, कंडीशनल भी आ सकती है और डाइवर्जेंट भी आ सकती है। जैसे यहाँ पे -1 पे डाइवर्जेंट आया और 1 पे कंडीशनली कन्वर्जेंट। I know I have missed the error estimation. I told you, all of you are pointing this out, but if you remember, I announced this properly in lecture class कि हम वो power series के बाद करेंगे, because error estimation एक combined topic है, वो बाद में आता है डिटेल में, तो जो हमने छोड़ा है उसको वहीं पे करेंगे। सो डोंट गेट पैनिक्ड अबाउट इट, बिकॉज वो एक ही कॉन्सेप्ट है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले वो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए आता है, बाद में वो पावर सीरीज के लिए आता है। सो मैं दोनों को कंबाइन करके पढ़ाऊंगी, राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हमने मिस किया है कुछ, वी विल बी डेफिनेटली डूइंग दैट, right? So with that, let's just move towards the next topic, right? So what we are, okay, let's just move to the next topic. तो ये पावर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे ही होने हैं। The more you practice, the more clarity you will be gaining about, क्योंकि अब टेक्निक कुछ नहीं है, it's all about practice. So you have enough questions in your tutorial sheet and books, so you practice from there and match your answers, or if you have any doubts you can bring that to the tutorial class. So let me move ahead with the next thing which we are going to discuss, and that is we are going to talk about Taylor series. So this topic is under the category of power series. ये भी एक power series ही है, as you will see, but it's a particular type of power series we are going to talk about. So let's first, write the definition or the statement for it. Let f be a function with derivatives of all orders. What do you understand by derivatives of all orders? Yes, what do you understand by derivatives of all orders? All means कितने orders हो सकते हैं? Infinitely many, right? So derivatives of up to nth order. Nth means n can be infinite, like because you have a function, so it can be differentiated as many times as you want. So it has derivatives of all orders. This is what it's mean. So theoretically, it means you can differentiate that function infinitely many times. So let f be a function with derivatives of all orders throughout some interval containing a as an interior point, then Taylor series of, or you can say Taylor series generated by fx, f be the function, about x is equal to a is given by. So अब हम वो सीरीज डिफाइन करने वाले हैं कि क्या टेलर सीरीज क्या होगी. So let me just write what is going to be. So it's k is equal to 0 to infinity f k a k factorial x minus a raised to power k. You don't want to use the notation of k. K is just an index. n की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. There is nothing wrong with that, because usually हम index n use करते हैं. So you can have this as your series. So if you look carefully, this is a power series. Why this is a power series? Because according to the definition of power series, we had this kind of series always as a power series, where you have the powers of some x raised to power n, और x की जगह पे वहां पे x minus या x plus something भी हो सकता है. So we call about that point we have expanded the power series, and it's multiplied with some coefficient, and that coefficient is a free from x, that is only a function of n. So you can see it here, this factor is containing the powers of x minus a, while this factor is going to be the coefficient. So first thing which should be clear about is Taylor series is a power series, but it is a specific type of power series in which the Cn
has been defined in a particular way. It's not a general power series, it's a particular power series in which the coefficients are given by this. Now the question is, what is this? Ye coefficient hai kya? So if you look at this coefficient, this Cn is Fn a by n factorial. So what is this notation? So if you just, okay, let me just move to next page. I'll be writing here. Let me expand this one. Let's expand this series. So when you put n equals to 0, right, what is the first term? F0 a by 0 factorial x minus a raised to power 0. What's the second term? 1 factorial x minus a raised to power 1. Second term, this is f double dash by 2 factorial x minus a square. And then similarly, the next term will be triple dash 3 factorial x minus a cube and so on, because this is going up to infinity. So first 4 terms I have written by substituting n is equal to 0, 1, 2 and 3. So from here you are clear that what this is denoting. This is denoting the nth order derivative of f sorry, this is denoting nth order derivative of the function at the point x equal to a. So we know this is the notation. So don't get confused कि ये function है, evaluated है और उसकी powers है. ये नहीं है कि f of a का square है या उसका cube है. This is not power of the function. This is the derivative. This is a general notation for denoting the nth order derivative. So this is the 0th order derivative term, first order, second order, third order, and so on. And x minus a is obviously power 0, 1, 2, 3, and so on. And this is divided by n factorial. So 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, and so on. Right? So that's what you can now connect this one. Why we wanted this? We are able to write Taylor series of a function only if this condition is satisfied. So function should be differentiable, not only one time, but infinitely many times we should be able to differentiate it, because there are infinitely many terms in this series and every term of the series contain one particular order derivative. So ये n कहाँ तक है? Infinity तक. So that makes this condition ये होना जरूरी है. अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो उसकी ये वाली सीरीज अगर हम लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड टेलर सीरीज, right? So now let's further simplify this one. So 0th order derivative of a function is, what do you understand by 0th order derivative of a function? What is the meaning of 0th order derivative of a function? The function itself, right? So we know that 0th order derivative of function is a function itself. So it is f evaluated at a. What is the value of 0 factorial? 1. Everybody knows 0 factorial is 1. And what is this raised to power 0? That is also 1. Anything finite, we know that is raised to power 0 is 1. So the first term of the series is nothing but f of a plus 1 factorial is 1. This is just f dash a x minus a. Second term, sorry, third term, f double dash a by 2 factorial x minus a square. F triple dash means third order derivative by 3 factorial x minus a cube. आप चाहो तो इनको evaluate करके लिख सकते हो, but it's easy to just remember in this sense. So finally we just get series fa f dash a x minus a f double dash a by 2 factorial x minus a square and so on. मीन्स जब आपको पावर सीरीज पर्टिकुलरली ये टेलर सीरीज जो है निकालने के लिए आए तो एटलीस्ट 4 to 5 टर्म्स आपको इवेल्युएट उसकी करनी है, so that we can see in the expansion. So the kind of question we are going to get is डिटरमाइन द टेलर सीरीज. अब आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स मिलेंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि व्हाई दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ सीरीज. अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बट व्हेन विल बी डूइंग द स्पेसिफिक एग्जांपल्स
it will be clearer to you. So I hope the definition is clear. So it's, I just repeated that you have a function with derivatives of all orders and a is some point. So we do not want derivatives to be existing for the whole real line. We just want they can be existing in some interval around a. So a is there on the real line. So उसके around कोई interval है, उसमें जो आपके derivatives हैं उस function के, they exist. The interval can be minus infinity to infinity, but it can be a specific interval also, right? अभी हम उस interval की बात नहीं कर रहे हैं. I will explain you the meaning of this interval. This interval is having the same sense जिसको हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि एक सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट सिर्फ अपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में ही होती है. सो बेसिकली दिस इज द सेम इंटरवल. And then the Taylor series generated by fx about the point x equal to a is given by this. So all what you need to remember is ये आपका टेलर सीरीज का जनरल टर्म है, nth टर्म. So आप उसको expand करोगे, so you will be writing the terms for it. So Taylor series is a specific type of power series in which we have these terms. So this is your Taylor series of f about the point x equals to a. So this a is, you can see, a parameter. So in the questions we will be given the value of a, that find the Taylor series about a is equal to 1, right? So anything they can be given to you. So in particular we have, if you put a is equal to 0, what happens? Let's see what happens. आप इस सीरीज में a को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो. It's just we are discussing a particular case. A can have any real value. Let's put a is equal to 0 and see what happens. Okay, then the series become, so you see जहां जहां यहाँ पे a आ रहा है वहां वहां आपकी 0 आएगी. So then your series becomes f of 0 plus f dash 0 x minus 0 plus f double dash 0 by 2 factorial x minus 0 square and so on. So that means जो derivative आप evaluate कर रहे थे a पे, वो अब 0 पे evaluate होंगे. So simplified form में f0 f dash 0 into x, because x minus 0 will be just x, f double dash 0 by 2 factorial x square f triple dash 0 by 3 factorial x cube एंड सो ऑन. सो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका. जैसे यहाँ पे x माइनस a आ रहा था, वहां पे a की वैल्यू 0 है. तो इस पर्टिकुलर सीरीज को बोला जाता है मैक्लॉरिन्स सीरीज. So there were two different mathematicians who worked individually on the Taylors and the Maclaurin series. They are the name of the mathematicians. So it is just they have a close connection. The connection is Maclaurin series is nothing but it is Taylor's series about the point a is equal to 0. और हम इसको x equals to 0 भी बोल देते हैं, क्योंकि जो आप जनरल डेफिनेशन जाते हैं तो यहाँ ये लिखा जाता है about x equals to a. So ये लिखा यही जाएगा x equals to a, but you don't forget कि x explicitly has to occur as a parameter here, जिसकी आपको powers लिखनी है. a means वो इस point की बात कर रहे हैं. तो x is equal to 2 अगर वो बोलेंगे तो दैट मीन यहाँ पे x minus 2 टर्म आएगा. So same here in Maclaurin series, this point is nothing but 0. So we say Maclaurin series is Taylor series about the point x equals to 0. Right? So let's just do one example first. A very simple example I'm going to take. So the question is, determine Taylor series of the function fx is equal to e raised to power x about x is equal to 0. So इस x equals to 0 को as I just told you कैसे इंटरप्रेट करना है कि ये x equal to a है, तो that means a की वैल्यू क्या है? 0. Don't get confused कि x को 0 डाल देंगे, right? Don't get confused in that. ये ऐसे ही लिखा जाता है about x equals to a, so a is 0. So basically what they are asking you to find Maclaurin series. तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये भी हो सकती थी डिटरमाइन मैक्लॉरिन सीरीज, but instead they just said determine Taylor series about x equals to 0. So let's see whatever it is. So function क्या है आपका? e raised to power x.
So we know that they are asking about Maclaurin series generated by fx is equal to e raised to power x. So we know the expansion I just shown you kya hai, this, right? So the general term will be n is equal to 0 to infinity nth order derivative evaluated at 0 and factorial x की power n. So this is the general term of Maclaurin series. तो हम डायरेक्टली एक्सपेंशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं f0 plus f dash 0 x f double dash 0 x square f triple dash 0 x cube, sorry, by 2 factorial भी आएगा, by 3 factorial and so on. Yeah, this is the series. Now we have to evaluate the function. अब हमें एक particular function given है, so हम इसके derivatives निकालेंगे, single derivative, double, triple and so on. So as I just told you that at least evaluate 4 to 5 terms to get to know what exactly the series is. So it's easy. So let's first write down the derivatives of this function. Yeah, so what is f dash x? What is f dash x? E raised to power x. What is double dash? Second order derivative, again e raised to power x. What is third order derivative? Again e raised to power x. So this is, that's why I said this is a very easy example. Whatever you do, the function, the exponential function has its all its derivatives as a same. So e raised to power x, e raised to power x keep on coming as all order derivatives. तो तीन derivatives से हमें पता चल गया है this is going to happen, right? अब आपको यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करना है एक्सपेंशन में, बट यू नोटिस केयरफुली ये इवेल्युएट करने हैं हमें जीरो पे. f डैश जीरो का मतलब है दिस इज f डैश x एट x इक्वल टू जीरो. तो ये जीरो हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. सो व्हेन यू विल बी पुटिंग जीरो हियर, सो f डैश जीरो विल बी e रेज्ड टू पावर जीरो. इवन हमें f जीरो भी चाहिए. सो आप फंक्शन में और उसके सारे डेरिवेटिव्स में आप पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दोगे जिसके अबाउट आप एक्सपेंशन कर रहे हो. तो वो पॉइंट आपको गिवन था जीरो, तो हम जीरो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यू सी e रेज्ड टू पावर जीरो इज वन. तो ये सारे डेरिवेटिव्स जो आएंगे आपके दे विल बी ऑल वन इंक्लूडिंग द फंक्शन. सो यही इवेल्युएट करना है, बाकी तो सब कुछ यहाँ लिखा ही हुआ है. सो दिस इज हाउ एवरी क्वेश्चन नीड्स टू बी डन. फंक्शन गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, आपको जनरल एक्सपेंशन लिखना है और फिर देखना है अच्छा हाउ व्हाट शुड आई नीड टू इवेल्युएट टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट्स. सो व्हेन यू विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ द function and all its derivative which you have just evaluated, it will be 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x raised to power 4 by 4 factorial and so on. If you want to write more number of terms you can write, but this is the expansion it is. So इससे अब आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो आप एक्सपेंशन आप देखते हो e raised to power x की, this is nothing but the टेलर सीरीज. तो जो जिस तरह की भी सीरीज अभी तक आप यूज करते हो, आपको e raised to power x की आई एम वेरी श्योर आप सबको पता है, विल हैव मोर फंक्शंस जिनकी हम सीरीज इवेल्युएट करेंगे. तो ये स्पेसिफिक सीरीज ऑफ इंटरेस्ट है. दीज आर particularly Taylor series, or you can call it Maclaurin series. Don't get confused between Taylor and Maclaurin. Maclaurin is same as Taylor, just आपको उसमें point जो है zero given है. So this is the expansion. So इसको ऐसे ही लिखना है, Maclaurin series generated by fx equal to e raised to power x is this. वो इसको ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि आप एक इनफाइनाइट सीरीज को इक्वल लिख पा रहे. हमें पता है दिस इज ट्रू, वी नो दिस ऑलरेडी कि ये एक्चुअली e raised to power x के इक्वल ही होती है, राइट? दिस इज समथिंग वी नो ऑलरेडी, बट अभी के लिए वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज दिस विल बी ओनली पॉसिबल अगर हमें पता चले कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, राइट? कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है? जो आपने टेलर सीरीज निकाली है. सो ओके, लेट मी जस्ट फ्रेज दिस वे. सपोज लेट्स नॉट राइट इट हियर. द क्वेश्चन इज नाउ कि आपके पास एक सीरीज आ गई है, ये टेलर सीरीज है, बट हमें पता है कि टेलर सीरीज क्या है, बेसिकली एक पावर सीरीज है. सो यू नो नाउ ऑल द टेक्निक्स for how to evaluate the convergence of power series, how to get the
interval of convergence of power series. Everybody knows that. So if the question asks, मान लो इसके साथ question होता, determine the Taylor series and then find the interval of its convergence. क्योंकि series determine करना is one thing, उसके बाद further question can be कि उसकी convergence determine करो. ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, बट मैं आपके क्वेरीज को सेटिस्फाई करने के लिए आपको एडिशनल बता रही हूँ कि जो सीरीज आती है, सिंस इट इज अ पावर सीरीज, तो यू नो कि पावर सीरीज की कन्वर्जेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं. अभी हमने डिस्कस किया जो प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर्स में, और आज भी डिस्कस किया है. सो यू कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चन एंड देन फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? ये एडिशनल है जो मैं बता रही हूँ, यूजुअली ये पूछा नहीं जाएगा. You know, this is the general term, x raised to power n by n factorial. You see this. इसको अगर आप जनरल टर्म में लिखना चाहो तो, otherwise the question finishes here only. Okay, so this is we have already discussed. जब हमने पावर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू किए थे, we already discussed this one. If you remember, I can recall you. अगर आप इसका मॉड लोगे और उस पे रेशियो टेस्ट लगाओगे, then what is the value of this limit? 0. So 0 is always less than 1. So this was convergent for all x. In fact, this is absolutely convergent for all x. So iska jo interval of convergence or interval of absolute convergence, that was minus infinity to infinity, and radius of convergence is also infinity. So this particular series, which is the Taylor series or the Maclaurin series of the function e raised to power x, is actually convergent everywhere for all values of x. If you remember the statement, the statement demanded you there will be some interval around that point A in which this is going to make sense. So make sense का ये मतलब है कि किस interval में वो convergent होगी तो, right? So I hope this is clear. इस question में पूछा नहीं था कि interval of convergence find करो, but ये मैं आपको additionally बता रही हूँ कि series find करने के बाद if this is asked कि उसका इंटरवल या कन्वर्जेंस भी डिटरमाइन करो, सो ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज टू अप्लाई द सेम टेक्निक व्हिच वी यू जस्ट अप्लाइड फॉर पावर सीरीज, बिकॉज टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज इज नथिंग बट पावर सीरीज ओनली, राइट? सो this is all about this question. Let's have another example. Fx equals to 1 by x at a is equal to 2. So we have to find the Taylor series. Here a is equal to 2. आपको point specific दिया गया है. So first what you have to do is find its derivatives. So what is f dash x? What is f dash x? Minus 1 by x square. What is f double dash x? 2 by x cube. What is triple dash x? Minus 6 by x raised to power 4. You can see these derivatives will be like this, and you can evaluate them. At least 3 to 4 derivatives you can evaluate so that you start seeing a pattern. Some terms you can see. Now you have to put which point, because the series, the Taylor series is f of a plus f dash a into x minus a, f double dash a by 2 factorial x minus a square, and so on. So you have to evaluate the derivatives at the given point. जैसे previous question में वो point 0 था, इस question में point 2 है. So what is, first of all, you have to write f2. What is f2? 1 by 2. What is f dash 2? Will be minus 1 by 2 square. इसको ऐसे ही लिखो, don't simplify this, means don't write this like this. You can write further, but अभी के लिए यहाँ पे हम इसको एक पैटर्न देखना चाहते हैं, तो let's just write it like this. What is f double dash 2? 2 by 2 cube. x की जगह पे आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है. What is f triple dash 2? Minus 6 by 2 raised to power 4. Right? So these are the derivatives. आप एक और अगला evaluate कर सकते हो so that you can see a pattern. So this is basically, you can try to see. Okay, let's substitute and then we'll try to find a general term of this.
What is f of a? What is f of a? 1 by 2. What is f dash a? F dash a is this, minus 1 by 2 square into x minus 2. अब आप a की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 2 plus. What is double derivative? It's 2 by 2 cube. ये साथ में 2 factorial प्रेजेंट है. दिस अ पार्ट ऑफ द सीरीज. आप किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? डेरिवेटिव्स की. तो डेरिवेटिव कितना आया? 2 by 2 cube. So 2 by 2 cube into 1 by 2 factorial into x minus 2 का square. What will be the next term? minus 6 by 2 raised to power 4. ये आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू है. इंटू 1 by 3 फैक्टोरियल है जो इससे नेक्स्ट टर्म होगी x minus 2 का क्यूब and so on. So at least 3 to 4 terms I should write so that we can simplify it to a certain level. So this is half. और एक चीज अब आपको क्लियर होगी कि इसकी टर्म्स ऑल्टरनेटिवली, ये जो डेरिवेटिव्स हैं, they are alternatively negative positive. So let me write it this way, minus 1 by 2 square into x minus 2. Next term will be plus. Now this 2 and this 2 factorial can get cancelled. This 2 and 2 factorial gets cancelled. As you can see, this 6 and 3 factorial gets cancelled. Similarly, आप एक next term evaluate करोगे तो उसमें ऊपर आना था 24. आप इसका fourth order derivative अगर निकालोगे, so that will be 24 by x raised to power 5. So 24 will be cancelled with the 4 factorial, right? जब आप इसके next term लिखोगे. So these factorials और जो power में आ रहे हैं numerator में फंक्शन के डेरिवेटिव्स में आ रहे हैं, दे आर गेटिंग कैंसल्ड. सो दिस नेक्स्ट टर्म इज 1 by 2 क्यूब x minus 2 का स्क्वायर. उसके बाद द नेक्स्ट टर्म इज माइनस, दिस माइनस स्टिल रिटेन्स 2 raised to power 4 x minus 2 का क्यूब, राइट. और सिमिलरली व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? अब आपको यहीं से पैटर्न नजर आना चाहिए. नेक्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव. दिस विल बी प्लस 1 by 2 raised to power 5 x minus 2 की पावर 4. यू कैन सी 2 का स्क्वायर है तो x minus 2 की पावर 1 है, 2 का क्यूब है तो x minus 2 की पावर 2 है, 2 raised to power 4 है तो x minus 2 की पावर 3 and so on. So this is all about this expansion. So the question finishes here only. आप इसको जनरल टर्म की फॉर्म में लिखना चाहते हो, you can write in the general form. I can tell you how to write that. But otherwise, even if you write it in this expansion form, that is clearly okay. This is fine. So this is the Taylor series about point A is equal to 2. Okay, let me just write. If you want to write it in general term, so what is going to be the general term of this series? So it will be minus 1 raised to power n will be present. First thing, it will be minus 1 raised to power n will be present because terms are alternatively negative positive. X minus 2 raised to power n will be present, divided by 2 की पावर एक एक्स्ट्रा है. So this is n plus 1. You can see जो आप किसी भी एक टर्म को रेफरेंस टर्म ले लो, जैसे ये है, तो इसमें माइनस 1 की पावर 1 है, तभी ये नेगेटिव आया है, राइट. x minus 2 की पावर 1 है, बट 2 की पावर 2 है. So this is all which is going to be the general term if you want to write. This is not mandatory कि आपको इस फॉर्म में सीरीज को लिखना ही लिखना है. आप यहीं पे एक्सपेंशन फॉर्म में लिख के उसको छोड़ सकते हो, बट एटलीस्ट प्रोवाइड दैट मच सिंप्लीफिकेशन. दैट इज just don't leave it at this step. So if something is getting cancelled, you are able to write it in a better way, you can write. Okay, so this was a Taylor series. Now if I ask you, you want to determine its convergence, so you will be able to do that because this is just a power series. ये इसका general term है, so all of you can determine its convergence. Basically it happens to be a GP series. ये geometric series बनेगा, you can see very easily. ये एक geometric series है, तो multiplier is, what is the multiplier of this geometric series?
अगेन आई एम टेलिंग यू, जो मैं बता रही हूँ दिस इज एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिर्फ थी टेलर सीरीज डिटरमाइन करो, वो हो गया है, आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म। जस्ट मैं आपको पावर सीरीज के साथ इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। सपोज यू वांट टू डिटरमाइन इट्स कन्वर्जेंस, सो ऑल कन्वर्जेंस के लिए आपको जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, एंड यू कैन सी दिट्स अ जीपी सीरीज। सो द जीपी सीरीज में जो आपका general term है, as you can see, will be r will be -1 x -2 by, मीन्स एक 2 आप जो है बाहर निकाल सकते हो, यू कैन टेक 1 2 एज कॉमन, बट उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 2, इसको लेट मी जस्ट, ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है, 1/2 एक आप बाहर निकाल सकते हो, बिकॉज एक 2 ऑड है, 2 की पावर एक एक्स्ट्रा है, यू कैन सी ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3, और फर्स्ट टर्म में भी हाफ है। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट टू हैव अ बेटर सिंप्लीफिकेशन, हाफ हम बाहर निकाल लेंगे, एंड देन यू कैन राइट इट इजीली by 2 की पावर n. So this is a GP series with r is this, and mod of r will be this, and for convergence we need this condition to be satisfied. तो जो भी sum of the series आएगा इसको आप solve कर सकते हो, mod of x minus 2 lies is less than 2, x minus 2 lies between 2 and -2, so this will be 0 to 4 will be the interval of absolute convergence, और जीपी सीरीज है तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी आएगा, मींस चेक कर सकते हो एंड पॉइंट्स पे ये डाइवर्जेंट ही आएगी, और जो भी सम ऑफ द सीरीज होगा तो इट विल बी a बाय 1 माइनस आर एंड हाफ विल बी मल्टीप्लाइड। वो एडिशनल है, पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, बट दैट्स हाउ यू नीड टू डू इट इफ इट इज आस्क्ड। तो जो इसकी एप्लीकेशंस है, मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन दैट वेयर इट इज यूज्ड, सो एज यू कैन सी इस सीरीज की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जो आपको मैंने ये वाला सीरीज दिया था। सो दीज आर द सीरीज एक्सपेंशन। इसके अभी एक कनेक्टिंग टॉपिक हम करेंगे टेलर्स पॉलिनोमियल्स, वहां से आपको और इसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा। इन द वेरी बिगिनिंग जब हमने सीरीज स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप अपने कैलकुलेटर में कंप्यूट करते हो ई स्क्वायर, राइट, इट विल गिव यू सम वैल्यू, हाउ डू यू थिंक इट इज इवेल्युएटिंग दैट वैल्यू, दे आर यूजिंग द टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन फॉर e raised to power x to evaluate that, right? So they are evaluating e raised to power 2 by putting ये e raised to power x का expansion है, by putting x equals to 2 in this series। तो जो भी वो they will, what computer or calculator will do, they will truncate it up to some finitely many terms आपकी accuracy के according, तो उससे वो इवेलुएट करेगा, राइट। ये मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ डिटेल में क्योंकि इट इज समथिंग रिलेटेड विद द एरर, जो भी हम पढ़ेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझ में आ पाएगा, बट इसकी एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने आपको बताया एप्लीकेशंस बहुत हैं टेलर सीरीज की, आई maybe share few more applications in the coming lectures, but this is majorly used for these kind of functions, the transcendental functions, exponential, logarithmic, जिनके हम polynomial approximations use कर सकते हैं। So ये questions के बाद जैसे ये हमें determine करना आ गया, अब इसके आप जितने मर्जी question करो, you can practice enough। जो next हम discuss करेंगे that will be Taylor's polynomials, right? So I will be taking up that tomorrow, not today, because we are already done with time. Let me just read the questions if somebody has in the chat box. Yeah. Okay. Yes. If you guys are confused in the absolute and conditional convergence, so I'll just say, just do the practice and revise it a bit more. It will be clear to you, right? And otherwise, we'll be taking your doubts in the tutorials. I didn't get your question, Vidushi. You have written on chat box.
X equals to 0. Yeah, one thing which I have just x equals to 0 signifies. So x equal to 0 is nothing but a particular point where you are expanding. Actually, Taylor series or Maclaurin series क्या होता है? What is the benefit of this mathematically? That आपको एक पॉइंट पे उस फंक्शन की और उसके फंक्शन के सारे डेरिवेटिव्स की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एक पॉइंट पे. कौन से पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे आप सीरीज इवेलुएट कर रहे हो. तो merely knowing the value of the function at one point and all its derivatives at the same point, you're able to get a series for the function. और अब इसमें x की आप कोई भी वैल्यू डालोगे, so that will be giving you the the function value and the जिस सीरीज जिस फंक्शन को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है at all the points. So basically Taylor series, the concept is that जो सेंटर, इसीलिए इसको सेंटर बोला जाता है ऑफ द इंटरवल, दैट इफ यू नो द इंफॉर्मेशन एट वन पॉइंट and within the interval of convergence you can find the properties of the function at all the points inside the interval of convergence. Right. Okay, so I'm leaving, so I'll be taking rest of your doubts tomorrow. I hope all doubts are clear. We'll continue with this Taylor's and Maclaurin series. Yes, Taylor series can be divergent. Taylor series is a power series. It can be convergent or divergent. It can be anything. Okay, yeah, that's all about today. Let's discuss rest of the things tomorrow.